Okay, I'm live. Let me check if I'm live or not. Yeah, excellent. Live is not showing. There's some kind of problem. This was live. Why can't I see it on? Okay, perfect. I'm live now. Let me change the thumbnail first. I mean title. What title is set? Untitled. Hmm, where do I change the title? Title. क्या title है? This is showing in me. Okay, now it's showing live. Okay, now it's showing live. There's just one problem. How do I change the title? I can't seem to. Poor internet connection. Sorry. That's true. Whatever, I'll change it later. For now, I will start breakfasting. So, good evening, everybody. Here I am to test one of my theories, or you can call strategies. Well, it's not actually a strategy. I'm just trying to see if the knowledge I currently have, if I combine it in, if I apply different combinations of it, can my trades work? And can I make profits from it? That's what I'm seeing. Let's just wait. This is the main problem for me. Yep. Now, let's create a session. Hmm. The name of this strategy will be 4 hour 15-minute intraday. And the what should I say that I will backtest it on multiple pairs, but I will start with NZJPY. Why you asked? Don't know. I just think this may perform better. NZDJPY. That's it. And which month should we do first? Hmm.
Let's start with Feb 2025. Feb 2025. Just wait a second, I will explain what I'm doing. So, in this system, I will, here are few rules that I will follow. First, I will only trade from 4-hour order blocks and breaker blocks. And my entry confirmation will be 15-minute CIST or true market structure shift. That's the basics. Now, another thing will be I will not hold trades over the weekend. First point, and there will be no break even on this setup. And what should I say more? Hmm, yep, this is it. And yes, I will only trade inside kill zones. I mean, I will only enter inside a kill zone. Sorry for the inconvenience. Let me see and check if I can change my. There's something that I want to change here. Sorry, 15 minutes. Edit channel. Just a second. Name of the live stream. Title of the live stream. Now let's start with our weekly analysis first. Just a second. Hmm. So market was in clear uptrend a long time ago, and now it is in a downtrend. Now, if I look at recent price action, it's clearly visible that this zone has been acting as a support previously
for multiple weeks, but the currently on this week market opened and it's opened below it. According to recent week, market is still in a downtrend after a long consolidation. Let's look on daily time frame. Okay, on daily time frame, I have an order block, kind of an order block, not an order block, but let's just say a support zone on the down time frame, on a downtrend, support level on a downtrend. Hmm. Now I'm ready. As expected, I knew something was here. Whatever you want to call it, you may call it, but I will call this hidden order block, breaker block, whatever you say. That's the name of this candle. Where currently market is. Also, it has already previously acted as a support point. So it's highly unlikely that again it will act as a support point, and for that I will mark this level because this is another pending level which may act as a support point. Now, back to 15-minute time frame. We have to remember that this point has already acted at the support as a support, or it has served its purpose by fulfilling its role as an order block. Now, let's see. Kill zone has started. Market has given CIST, and I will target just 1:2 till this hidden order block. But let me be frank here. I do not think that this entry is a good point. This entry is a good entry because the level has already acted as a support or fulfilled its purpose. Market is again here, and I don't know what it will do. So this is a highly risky trade, but I will still take it. Like I said before, it has already acted as support. और हाँ, मैं इस बार नोट नहीं करने वाला नोशन में, मैं बस टेस्ट करने बैठा हूँ कि इस स्ट्रेटजी पे पोटेंशियल है कि नहीं. प्रीवियस जो स्ट्रेटजी था उसमें था पोटेंशियल, आगे बढ़ भी सकता था, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिले और स्केलेबिलिटी नहीं था उसमें, क्योंकि मैं 3 मिनट्स और 1 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ. तो अगर वो पर्टिकुलर पेयर कोई एक या दो पेयर में को ज्यादा ट्रेड नहीं देते हैं तो उस स्ट्रेटजी में मैं ये नहीं कर सकता कि मैं मल्टीपल पेयर्स को देखूं, बट क्योंकि इसमें 15 मिनट के क्लोजर पे ट्रेड है, देन मैं मल्टीपल पेयर्स को देख सकता हूं. Must have been news there.
I'm a bit skeptical about the news that should I trade it or not, stuff like that. Let's move to next day. My trade direction was correct, but I traded before news and got stopped out. Yes, I'll remove this point because it has served its purpose completely and now it is fully mitigated. And if I look the pointers here, I have another pointer as this candle, and from the downside I have this candle. I'll only mark these two levels. Let's see how the market plays. Market has given CISD, but market has yet to tap the level. Point to be noted, market has yet to tap my level. Market has tapped this level, this candle, but I will wait. And I think I should wait, but this trade is a wrong trade according to my setup, but I will still trade it just to see what happens, just like previous trade. Okay, so this is what happens if you do not follow your rule properly. Mhm, 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 mhm. I'll start again. Now I will mark another candle which will be this candle. I'll mark this as an order block this time. Remember, previous two trades were not actually the trades which I should have taken. Those were just random trades.
This will go down. Oh, I marked it. I did not mark it properly. So market is at my level, and this level is an intact level. Now market did give the CISD, but it's way past my kill zone time, so no entry. Market is still on my zone. So
look for selling opportunities. This level is now thoroughly destroyed. My level is new level is this. My kill zone started around, yep, this point. Oh shit. Shit, 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 shit. Yep, no entries were there. Market created lower low. Market has again tapped to a level where it has previously acted as a resistance point or served its purpose. But this time the only difference is it's in the time frame where we trade, and market has given us entry. 1:2. Shit, I kind of missed the trade by forwarding it a little too much. This was a trade setup that I forgot. Sorry for the inconvenience, but this this was the setup. Pretty nice trade. ये वही पॉइंट पाया है जो पहले एक्ट कर चुका है या अपना पर्पस फील कर चुका है, दोबारा से उसी पॉइंट पे आ रहा है। देखते हैं। क्लोजर थोड़ा सा ऊपर हो गया। नो वरीज, आई विल स्टिल टेक दिस ट्रेड। 1:2, place order. चलो, new candle has formed on 4 hour time frame.
So here I can see market is at order block for the downside. Let's see what happens. Market has given entry for the downside. This is the entry. Let's see. Okay. So SL would have been hit if I traded like that. By the way, no weekend trades, but the trade is still running. Hmm. So market is at a hidden level. Well, I'm just saying hidden for the sake of it. Let's just say unwanted candle zone. CISD has been given, but this CISD is a failure zone. So I will wait for a proper CISD, and it did not happen. Okay, market has tapped yet another zone. Absolute waste of time. Well, the problem is in my implementation. Is in my implementation, okay? The PNL is depressing. So अगर मैं देखूं
कोई प्रॉपर जोन नहीं है। मैं वेट करूंगा प्रॉपर जोन के टैप होने का, मार्केट उसके पास आने का। ठीक है, आ गया मार्केट नीचे, और मैं ये एक फ्रेश जोन मानूंगा। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग अभी बच्चा है हमारा। हाँ, हमारा टाइमिंग शुरू हो चुका है। और अगर मैं सेल करना है मेरे को, तो सेल करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा ये जोन है, बट वो जोन बहुत बड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ से ही सेल करूंगा, इस पॉइंट से। उस पॉइंट से पहले पहले कोई सेल नहीं। अब देखते हैं क्या मेरे को कुछ स्ट्रक्चर मिलता है 15 मिनट्स पे। अगर मिलता है देन वेल एंड गुड है, मैं यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लूंगा। रिसेंटली तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। हम्म। ये जोन पे है, बट ये जोन का अब कोई वैल्यू नहीं है। ये जोन का कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू है इस जोन का। बट अगर यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर मिलता है देन मैं शॉर्ट कर लूंगा। ओ शिट, जस्ट माय डम लक। दिस, why why must it happen with me and just me? I was ready to short. Buying zone has served its purpose. Now I'm again with the selling zone, and this time I will not forget to change the time frame. By the way, this is also a selling structure, but it is a one candle CISD, and my belief for the one candle CISD is not that strong. So I will wait for the covering of full candle here. Now I will trade. Straight to TP. By the way, now let's just say if I would have taken the trade according to 4 hour time frame, then where could my next target? Where would my next target be? This low? Yep, this low. And on 15 minutes, would have checked if this is correct target or not.
There is no order block or breaker block at this point. Every level has been mitigated, almost every level. Hmm. Except for this one. So I will not rush to trade and will wait. Yes, market has again tapped the level, but failed to give a proper entry. At this point, my selling zone is above. There's no buying zone at this point. This is it, and as you may see, this is the result. It could have been better, and from what I have seen, this strategy has the potential. I will create another session. This time, I will create a session of March and ZEJPY March 2025, and
Perfect. Market has tapped the level. Now let's trade again. Oh my god, that's too much, but I still got 1:3. Almost. So it's alright. Now moving on to next pick. What a nice ball. No setup. Maybe this was some zone, but I'm marking the recent zones. So no zone for me. Look, here we go again. Market has already acted as a resistance from this zone, and we are at this zone again. I don't believe that this zone will again act as a resistance point, but still I will see what happens. I will put the RR, but this time I will not place the trade because we have learned from our previous mistakes that that was wrong. Actually, the trade has already happened. Trade was at this point. Yes, 1:2 till this. This is 1:2. I'm inclined to believe that market will take this high resistance if it comes down. That is okay. Our kill zone is still there, and just after the kill zone, I have gotten an entry at this point after a huge liquidity sweep. But I'm starting off. I will not take this entry.
Like I said before, if I would have taken this, I would have gotten stopped. Okay, now this zone, which has market given a previously breakout of, it may act as a support for the market. Let's see, देखते हैं क्या होता है. चलो. That's nice. I got a solid entry at this point, but I do not feel too good about this zone. I really do not. Place my take profit at here. 1:2 at the here and 2.5 at this. Yes, I'll take place my trade this point at this point. TP hit. अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि पहले और अभी में क्या अंतर आ रहा है, कि मेरा टीपी आ रहा है, पहले वाले में ऐसा ला रहा था. अंतर सिंपल है कि पहले मैं कहीं पर भी ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था और अभी मैं प्रॉपर जोन्स का वेट कर रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी ऐसा नहीं आएगा, आ सकता है, बट बस अंतर इतना है कि मैं प्रॉपर जोन्स का वेट करता हूँ, उनके टैप पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये वाला है, मेरे को लगता नहीं कि टैप करके मेरे को एंट्री देगा अच्छा सा, बट स्टिल आई विल सी. टैप किया क्या? अब यही है, मैं इसको टैप मानूं कि नहीं मानूं. मान तो सकते हैं कि टैप किया, बट इच्छा नहीं हो रहा. एक एक पिप से क्योंकि मार्केट दिक्कत कर देता है. 1:2 चलाते हैं. हाँ, टैप नहीं किया था. प्रॉपर जोन्स का वेट करना है कि टैप हो. देखो, अभी भी मार्केट कुछ अच्छे जोन पे नहीं है, तो मैं वेट करूंगा. हाँ, अब मार्केट दोबारा से एक ठीक ठाक से जोन पे है. अच्छा जोन में इसको अभी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस जोन इज बेटर देन प्रीवियस वन. तो अगर यहाँ स्ट्रक्चर मिलता है देन ट्रेड लेंगे, वेल एंड गुड है. न्यूज का पक्का ये न्यूज का है. अब न्यूज के 15 मिनट बाद एंट्री तो कर सकते हैं. स्टॉप लॉस देखते हैं कितना बन रहा है. पहले ज्यादा ही बड़ा बन रहा होगा तो फिर लेने का सेंस नहीं है. इतना भी बड़ा नहीं है स्टॉप लॉस.
इस पर 1:2 यहाँ मिल रहा है, पॉइंट पे तो मिल रहा है, बट आई एम inclined to believe that मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा करते करते ऐसा कर देगा, ऐसा। तो मैं वेट करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा वैसा ही कर रहा है कि देखो, इस सेटअप में गलती नहीं था, बट वो ये न्यूज के साथ थोड़ा सा ये कैंडल का स्ट्रक्चर जो CISD दिया वो मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए बस मैंने एंटर नहीं किया। यही बस तो डिस्कशनरी अप्रोच काम आता है। अगेन वेट करूंगा कि आगे कोई ट्रेड मिले मेरे को। क्या कोई जोन है? नहीं, कोई जोन नहीं है। क्या कोई जोन है? कहने को तो जोन है, बट ये जोन है चिंदी चोरी वाला जोन। यहाँ अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो ये फोर्स्ड सेटअप के अंदर आएगा, क्योंकि ठीक नहीं है करना। मैं डायरेक्ट एक कैंडल आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर CISD कहाँ मिलता? हाँ, यही एक CISD है जो अगर मैं ले लेता तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप आउट भी हो जाता। जैसा कि मैंने कहा, डिस्कशनरी अप्रोच ऐसा ही काम आ रहा है। बस डिस्कशनरी और मैकेनिकल का मैंने ऐसा मिक्स रेडी किया है कि मेरे को ट्रेडिंग में भी, मेरे लिए ट्रेडिंग करना थोड़ा आसान रहे, और जो डिस्कशनरी में जो प्रॉपर एज रहता है वो भी मेरे को मिल जाए। ये मार्केट यहाँ है, ये एक पॉइंटर है। अगर यहाँ से मार्केट जाता है नीचे देन वेल एंड गुड है। चेक करते हैं क्या होता है इस पॉइंट पे। ओके, मार्केट ने यहाँ एंट्री दिया है, बट देखो फ्राइडे का टाइम है, फ्राइडे का टाइम है, और अगर मैं यहाँ फ्राइडे में इंट्राडे का एंट्री बना रहा हूँ तो मेरे को एग्जीक्यूशन भी फास्ट चाहिए, ट्रेड की TP भी फास्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ओवर वीकेंड तो ट्रेड होल्ड नहीं करने वाला ऑलरेडी। मतलब 2 कैंडल में पता चल जाएगा क्या होना है, तो मैं नहीं ले रहा ट्रेड में एंट्री इसकी। ठीक है, मैं नहीं ले रहा क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड है, सिंपल। वाह, मार्केट ट्रेडिंग टाइम से बाहर। कहने के लिए जोन में है, बट मैं वेट करना चाहूंगा। हाँ, अब मेरे पास थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है स्लाइटली बेटर है प्रीवियस स्ट्रक्चर से। हम्म, मतलब जोन अच्छा है कहने का मतलब।
देखो यार, ये भी थोड़ा सा पहले एंट्री दे चुका है ऑलरेडी। इस पॉइंट पे सेल था हमारा, ठीक है। टू, चलो यही ठीक है। मैं देखूंगा क्या करना है। देखो ऐसे ला जाता। अब ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया? सिंपल लॉजिक है, मैं एंट्री थोड़ा बाद में करूंगा सोच रहा था। मैं यहाँ ट्रू मार्केट सक्सेस शिफ्ट देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरे को नहीं मिला, तो मैं एंट्री नहीं लिया। देखो ये भी गया। अब इसमें भी मैं एंट्री का प्लान नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट मेरे को जोन पे मिल जाए। तो दो ट्रेड मिल चुका है मेरे को महीने का शुरू में ही, दोनों ऑलमोस्ट 1:2.53 बोलो, 1:3 के आसपास का। 2.5 भी अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो 5% के मेरा गेन हो जाता है 1% रिस्क में भी, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा मैं कई सारे पेयर के साथ ऐसे ही सेम सेटअप पे सेम तरीके से ट्रेड लेने वाला हूँ, तो प्रॉब्लम और भी नहीं है। ओके, मार्केट हमारे पास एक हिडन पॉइंट पे है। हिडन पॉइंट नहीं, यस पॉइंटर पे है। इस पॉइंटर पे मैं देखूंगा कि कोई ट्रेड बनता है क्या। ओके, अगेन मेरे को मार्केट ने दोबारा से पहले ही CISD दे चुका है, ठीक है। 1:2 इस पॉइंट तक के है। मैं यहाँ ट्रू मार्केट से शिफ्ट का वेट करूंगा। अब मेरे को मार्केट दोबारा एंट्री दे रहा है। किल जोन अभी भी इंटैक्ट है मेरे पास। अब 1:2 ऊपर आएगा। बट मेरे को ये अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट जो जोन है मेरे, जहां से मेरे को एंट्री मिलना चाहिए था, उससे बाहर में दे रहा है एंट्री। बट स्टिल मैं लेऊंगा। अब इतना में तो ओश, गाड़ी स्टार्ट हुआ है कि क्या है? यस हुआ है स्टार्ट। ओके, तो मैं अब सेम जोन को एक्ट कर रहा है, तो मैं फिर से ट्रेड नहीं लूंगा इसमें। वेट करूंगा कि मेरे पास मार्केट मेरे को टाइमिंग और जोन परफेक्ट दे। जब तक टाइमिंग और जोन परफेक्ट नहीं रहेगा तब तक ट्रेड नहीं रहेगा। सो मच। अभी भी मार्केट कोई जोन पे नहीं है। अब मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट हाँ एक जोन पे है। मैं इस कैंडल को मार्क कर ले रहा हूँ, इसको जोन की तरह मैं एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है असर पड़ जाए, हो सकता है टीपी भी आ जाए, देखते हैं।
मार्केट जोन टैप किया है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट इसको ले ले, उसके बाद सीआईजी दे। ले लिया। और सीआईजी तो खैर यही हो गया था। मैं लेकिन इसके नीचे क्लोजर चाहूंगा। तो क्लोजर तो नहीं दिया, टाइमिंग भी निकल गया हमारे ट्रेड का, तो नो ट्रेड। तो फिर मैं आगे एक और ट्रेड लगाना चाहूंगा। हाँ, लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ बस एक रिजेक्शन दे चुका है नीचे आने का, तो अगर दोबारा जाता है तो जोन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मार्केट को कोई प्रॉपर हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, उसको स्वीप करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर वैलिड ट्रेड बनेगा। देखो टाइमिंग तो बाहर निकल गया। तो फिर से आगे चलते हैं, क्या है करना है। किल जोन, अब किल जोन वापस आ चुका है। जोन में नहीं है मार्केट, अच्छा जोन में आ गया। माय फॉल्ट कि मार्केट इस जोन पे आया और मेरे को लगा था नहीं आएगा। फ्राइडे, वैसे फ्राइडे बता रहा हूँ, फ्राइडे ठीक है। तो अगर ये ट्रेड आखिरी आखिरी में बनता है तो नो ट्रेड, नो ट्रेडिंग डे। कब बना ये? चलो बना तो पहले, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा बना है। नहीं एक्चुअली स्टॉप लॉस बड़ा नहीं बना है, स्टॉप लॉस परफेक्ट बना है। तो ट्रेड भी लेट से नहीं बना है, टाइम में बना है अपने। ये एक ट्रेड है जो कि मैं मिस कर दिया। यस, ये वाला जो ट्रेड है मिस हो गया। ये 1:2 का परफेक्ट सेटअप था जो कि मैंने मिस कर दिया। लिया रहता तो अभी अकाउंट मेरा थोड़ा सा और अप रहता, ऑलमोस्ट 9%। तो मैं वेट कर लेता हूँ, आई मीन वेट कर लेता हूँ बोलता हूँ, आगे चलता हूँ। कहाँ जाना है मार्केट को देखते हैं, वेट करते हैं। 29:31 आई थिंक खत्म हो गया। यस, खत्म हो गया। अब मैं एनालिसिस देख लेता हूँ कि कैसा बना है। 4 ट्रेड था एक्चुअली में। 4 ट्रेड था। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का ही स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, मतलब प्रॉफिटेबल। बट इसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से ट्रेड लिया है रादर देन पिछले वाले पे। लाइव में तो हो सब लोग देख ही रहे हो कैसा ट्रेड लिया था पिछले पिछले सेशन में, बड़ा ही बेकार टाइप का